Hey, all the students, CAT 2023, the countdown has begun now. वैसे तो हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे पिछले कई महीनों से कैट की तैयारी कर रहे हैं, पर एक्चुअली जब एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है ना तो उनकी सीरियसनेस और बढ़ जाती है. So students, here comes the big news. CAT 2023, the application process is starting on 2nd August. तो 2nd अगस्त सुबह 10 बजे से लेकर सितंबर 13 इवनिंग 5 o'clock तक द एप्लीकेशन विंडो विल रिमेन ओपन. बट सारे स्टूडेंट्स हर साल मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक्चुअली लास्ट डेट का इंतजार करते हैं, तो हमें लास्ट डेट का वेट नहीं करना है. एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक वी पीपल हैव टू स्टार्ट फिलिंग द कैट एप्लीकेशन एंड कैट इज गोइंग टू बी ऑन 26 नवंबर. एंड स्टूडेंट जो डिटेल्स हैं, दिस ईयर IIM लखनऊ is going to conduct this paper and Dr. Sanjeet Sinha is going to be the convener of this CAT. And सबसे important इस CAT को लेकर कुछ बहुत important updates मैं आपको देता हूँ. ये वाला जो CAT है स्टूडेंट्स, दिन में 3 slots होंगे. इसका सीधा सा मतलब है this CAT is also going to be of 120 minutes. Same pattern होगा 40 minutes का. And I believe that कि इस बार number of questions में कोई change नहीं होगा. So CAT 2021 and CAT 2022, इन दोनों कैट का जो पैटर्न था, द सेम पैटर्न पॉसिबली इज गोइंग टू रिपीट दिस ईयर. सो 120 मिनट्स का टेस्ट, 40 मिनट्स के 3 सेक्शंस, 24 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, 20 क्वेश्चंस ऑफ DILR एंड 22 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट. सो दिस इज गोइंग टू बी द पैटर्न दिस ईयर ऑल्सो. हालांकि ये पैटर्न ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होता है, लेकिन जब भी कैट ने दिन में 3 स्लॉट्स के टेस्ट करवाए, इसका सीधा सा मतलब है 2 घंटे का टेस्ट होगा, not of 3 hours. To all the students, here the countdown begins. Icon Age Cat channel पर a lot of content is available and you people can keep following that. आने वाले दिनों में on this channel we are going to post each and every information about कि which are the colleges which are going to take the score of CAT. And believe me students, CAT को लेकर डर मत रखो मन में. It's going to be very tough to get into the best of the colleges. I do understand getting into IIM Ahmedabad is not easy. Getting into IIM Bangalore is not easy. But students, अगर आप कैट में 99 परसेंटाइल नहीं भी ला पाते हो, तो भी स्टूडेंट्स 95 पर, 90 पर, 80 पर या फिर 75 परसेंटाइल पर भी बहुत अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो इवन इफ यू पीपल आर नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, मैथ्स एक्सेट्रा, डोंट लूज होप. जस्ट टेक कैट एंड प्रिपेयर विद आइकन्स एज कैट. सो सी यू वेरी सून. सब्सक्राइब करना नहीं भूलना इस चैनल को, एंड लाइक जरूर करना है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.